चलो बच्चों, let's see the question here. A, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is correct explanation for statement 1. B, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation for statement 1. C, statement 1 is true, statement 2 is false. D, statement 1 is false, statement 2 is true. Statement 1, atomic radius of inert gases is largest in the period because statement 2, effective nuclear charge of inert gases is minimum. Here we will start our solution और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद की कॉन्सेप्ट इन दिस केस. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, दैट when we talk about inert gases, we know that in case of inert gases, they have full-filled electronic configuration. So here we will denote electronic configuration by EC. So due to that, inert gases are highly stable and as a result, ये जो inert gases होंगी ये कोई भी केमिकल कंपाउंड नहीं फॉर्म करेगी बिकॉज ऑफ रियली हाई स्टेबिलिटी. सो ड्यू टू दैट atomic radius, that is, there won't be any covalent radii. In this case, we will have van der Waals radii, and that will be high as compared to other elements of the period, because this we are talking in same period. तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 that says atomic radius of inert gases is largest in the period, this is true. नेक्स्ट स्टेटमेंट है effective nuclear charge of inert gases is minimum. Effective nuclear charge, as we know, this will be high in case of inert gases because जो inert gases है यहाँ पे full filled electronic configuration है. That means जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा एंड उसी की वजह से क्या है, जो इनर्ट गैसेस है दे आर हाईली स्टेबल. सो दैट इज Z इफेक्टिव इज हाई फॉर इनर्ट गैसेस. बट स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमारे पास यहाँ पे, दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ इनर्ट गैसेस इज मिनिमम. हेंस स्टेटमेंट 1 is true and statement 2 is false. So C is correct option in this case. I hope you understood the explanation. All the best.